children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about geometry. So let's start with that. Point, line, line segment and ray. So अब हम पढ़ेंगे बच्चों पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट एंड रे. So let's start with point first. The simple geometrical form is the point. Okay beta? It is a dot made by a pencil on a piece of paper. A point is denoted by a capital letter. In the figure it is read as point K. Just like this. ये हमारा एक point होता है. Okay? लाइन क्या होती है? According to the latest trend of mathematics, the length of a line is not limited. It has no end points. इसके points कुछ भी end point नहीं होता है. Its length is infinite on both sides. A line cannot be drawn completely in reality. To show a line, two arrows are put on the two ends of a line segment. Arrow indicates that the line is going on in the directions of the arrow with no ends. Okay, so this is line beta. Okay, now line segment. Any part of a line is called line segment. A line segment has two endpoints. AB is line segment in the figure given below. Okay, so this is called line segment. इसके क्या होते हैं, fixed हमारे points होते हैं. Now ray. A ray has one end point. Ray जो होता है सिर्फ उसका एक end point होता है, but there is no other point, no other end point. We put an arrow on the other sides. Okay, so now see differences between a line segment and a ray. First one is given beta line. So ये line है, इसका ये sign है. This is line segment and this is ray. First one is line. A line cannot be drawn on a paper, but we can represent it by a diagram. Okay? और हमारा line का क्या है? AB represents a line like this way. ये हमारा sign है. थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. एंड फोर्थ इज इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई हमारी लाइन लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है. नाउ लाइन सेगमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज है अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, वो हम पेपर में बना सकते हैं. ए बी रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट और उसका साइन हमारा ये है लाइक दिस. इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके फिक्स्ड टू एंड पॉइंट्स होते हैं. इट हैज़ डेफिनेट लेंथ और उसकी लेंथ भी फिक्स्ड होती है. रे क्या होता है? अ रे कैनॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर बट वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम. ए बी रिप्रेजेंट अ रे लाइक दिस. इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इसके सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है. इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. Just do practice well beta. Okay, this is very important. So now move on next one, which is measurement of line segments. We all know that a line segment has a definite length and it can be measured with the help of a ruler or scale. इसी तरीके से हम measure करते हैं. Process of measuring a given line segment, place the zero mark on one end of the line to be measured. Let the scale run along the line segment to be measured. Read the mark which corresponds to other end of the line. Okay, now see the example. Measuring a given line segment PQ. अब ये हमारा रूलर है, इसमें PQ दे रखा है. अब इसको मेजर कैसे करते हैं, let's see. Place the ruler against the given line as shown above. Read the mark at the two ends of the line segment PQ. It is clear from the ruler that he ends P of the line segment touches O, वो O से टच होना चाहिए mark of the scale, and the end Q touches H. ओके, जो Q है हमारा वो 8 पे टच होना चाहिए और ये स्टार्ट होना चाहिए हमारा 0 से. Mark of the scale, so the length of the line segment PQ will be 8 centimeter like this way. Okay, so this is how we just measure the length. So now drawing line segment. अब line segment को कैसे draw करते हैं? To draw neat and uniform lines, use a firmly pointed pencils. Finally pointed, हम उसको अच्छे से क्या करेंगे, pointed करेंगे pencils को. The pencil's point should be shaped like the pointed end of a needle. बहुत अच्छे से उसको
शार्प करने पे वो इस तरीके से होनी चाहिए जैसे नीडल। होल्ड योर रूलर फर्मली, अच्छे से पकड़ो अपने रूलर को। प्लेस द 3 मिडल फिंगर्स अपॉन दैट पार्ट ऑफ द रूलर विच यू डिजायर टू यूज, लाइक दैट वे। स्प्रेड द फिंगर्स अ लिटिल as shown in the figure below and press the ruler lightly on the paper. The thumb and the little finger are not on the ruler at all. Just see the example beta. Draw a line segment PQ of length 4 cm. हमें 4 cm की length हमने draw करनी है. So now solution. Place your ruler on the paper. Press it with one hand. Use a pointed pencils to mark a point P against the O. Mark as shown above. Mark another point Q against 4 cm mark. Keeping the ruler steadily, join the 2 points now. This is required line segment of 4 cm. 0 पे रखना है और जहाँ पर हमारा 4 है वहाँ पर प्लेस करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है बेटा. Or don't move your hand while just making line segment. Okay, so I hope you understood well. So now move on next. Exercise 15.1. Filling the blanks. A ray has dash end point. जो हमारी ray होती है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ray के कितने end points होते हैं? So ray has only one end point. Next, a line has how many end points? Line के कितने हमारे end points होते हैं? No. Okay. So I hope you understood well. So these are the other questions. You have to do it your own beta. Okay. So now move on next topic, which is open shapes. Shapes that have 2 end points are called open shapes. They start from one point and end at other point. Okay. So now move on next. Following are the examples of open shape. Open shape कैसे होती है? जैसे ये open shape है, this is open, ये भी खुली हुई है और ये भी खुली हुई है. So this is called open shape. Now closed shape. Closed shape क्या होती हैं? Shapes that start and end at the same point are called closed shapes. Following are the examples of closed shapes like this. ये कहीं से भी खुली नहीं है, पूरी ऐसे covered है. Like that, this and this. Okay, so this is called closed shaped. So now move on polygons. अब ये polygons क्या होते हैं? Let's see. The closed shapes that are made up of line segment only are called polygons. Polygons की property होती है वो closed तो होते ही हैं but वो सिर्फ line segment से बनते हैं. They have 3 or more line segment और वो कितने होने चाहिए? या तो 3 और उससे ज़्यादा भी line segment उसमें हो सकते हैं polygons बनाने के लिए. The line segments which form a polygon are called its sides. और जो हमारे polygons बनाते समय उसके जो parts होते हैं वो sides कहलाते हैं. The point at which 2 adjacent sides of a polygon meet is called a vertices of the polygon. The plural of vertices is vertices. The polygon shows here has 4 sides and 4 vertices like this beta. Okay, ये हमारे sides है और जहाँ ये 2 point मिल रहे हैं ये हमारे vertices कहलाते हैं. I hope you understood what is polygons. So now move on types of polygons. अब polygons कितने types के होते हैं? First one is a polygon with 3 sides is called triangle. Okay. A polygon with 4 sides is called quadrilateral. जिसके 4 sides होते हैं उसको quadrilateral कहते हैं. A polygon with 5 sides is called a pentagon. ये हमारे pentagon हैं. A polygon with 6 sides is called a hexagon. A polygon with 7 sides वाले को क्या कहते हैं? Heptagon. और 8 sides वाले को क्या कहते हैं? Octagon. So this is very important beta. Just do practice well. Triangles, quadrilaterals, pentagon, hexagon, heptagon and octagon. Okay. So I hope you understood all types of polygons. So now move on triangles first. A simple closed figure bounded by 3 line segments called a triangle. A triangle has 3 sides and 3 corners, means vertices. The corner of a triangle is called a vertex. Okay. In the given figure PQR is a triangle. ये हमारा triangle है PQR. So first one is 3 sides, namely PQ, QR and RP. इसके जो 3 sides है like this, that way and this is. So ये हमारे क्या है? Sides.
बी पार्ट है 3 वर्टिसेस नेमली पी क्यू आर, और इसके 3 वर्टेक्सेस है, जो एक हमारा पी है, क्यू है और ये हमारा आर है. ओके, द सिंबल फॉर ट्राइंगल इज लाइक दिस. ये हमारा सिंबल होता है ट्राइंगल का. Thus, triangle PQR means triangle PQR. It may be noted that in describing a triangle, we may name the vertices in any of the following orders like PQR बोलो, चाहे QRP, RPQ, QPR और PRQ and RQP. Okay, so ये हमारे क्या हो गए triangles. I hope you understood well. So now move on quadrilateral. अब ये quadrilaters क्या होता है? Let's see बेटा. A simple closed figure bounded by 4 line segment is called quadrilaters. So quadrilater की हमेशा 4 sides होंगी. Just do remember. In the following figures, PQRS is a quadrilateral. Okay? It has 4 vertices, namely PQRS. 4 sides, namely PQ, QR, RS and SP, और ये इसकी साइड्स हो गए. अब हम सीखेंगे एडजेसेंट साइड्स. अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड्स. साइड्स क्वाड्रिलेटर्स की साइड जिसकी कॉमन वर्टेक्स होती है वो उसकी एडजेसेंस होती है. 10 PQ, ये हमारा PQ हो गया. QR, RS and SP and PQ form pair of adjacent sides in the quadrilateral PQRS. So I hope you understood well adjacent sides. So now move on opposite sides. In a quadrilateral PQRS, PQRS make one pair of opposite sides. QR and PS makes another pair of opposite sides. Okay बेटा. Now diagonals. अब ये diagonals क्या होते हैं? Let's see. The line segment joining the opposite vertices of a quadrilateral are called its diagonals. Thus, a quadrilateral PQRS has 2 diagonals, namely PR and QS like this. Okay, ये यहाँ से diagonal जा रहा है हमारा, एक ये इस तरीके से हमारा ये diagonal जा रहा है. Okay, I hope you understood diagonals. Now move on rectangle. A rectangle is a special type of a quadrilateral in which opposite sides are equal. इसकी opposite sides equal होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. Diagonals are equal. इसके diagonals जो होते हैं ये भी equal होंगे हमारे. Okay. In the adjoining figure, quadrilaters A, B, C, D, as AB is equal to CD and AD is equal to BC. Okay. B में है AC is equal to BD. So this is the property of rectangle. Okay. So I hope you understood well. So now move on next, which is square. A square is a special type of rectangle in which all the 4 sides are equal. The diagonals of a square are also equal. The adjoining figure shows a rectangle in which PQ is equal to QR, is equal to RS, is equal to PS. Hence, PQRS is a square. Clearly, PR is equal to QS. So, this is the property of squares बेटा, क्योंकि इसकी चारों sides बराबर होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? PQRS is a square. Clearly, PR is equal to QS. Okay, so I hope you understood well. So now move on exercise 15.2. Filling the blanks. A polygon formed of only 3 line segment is called. वो polygon जो सिर्फ 3 line segment से बनता है वो हमारा क्या होता है? Yes, we know that. हम उसको कहेंगे triangle. Triangle is a polygon that just made by 3 line segment. A polygon formed of only 4 line segment, जो सिर्फ 4 line segment से बनता है वो हमारा क्या होता है? Quadrilateral. Okay, so I hope you understood well. So these are the other questions. You have to complete it your own beta. Okay, so I hope you understood well. So now move on next, which is circle. In our daily life, we see many round shapes such as coin, disc, wheels, plates, chapatis, etc. around us. So these are the shapes, coins, wheels and so on.
all these things are circular. ये सब गोल शेप में है हमारी. Circular means having shape of a circle. A circle is an important shape in geometry. Circle is a simple closed curve whose all points are at equal distances from a fixed point inside it. This fixed point is called center of the circle. Like ये जो हमारा center है, इससे जितने भी हमारे sides होते हैं वो सारे equal ही होते हैं. In the adjacent figure, O is the center of the circle. All the points situated on these circles as A, B, C, D and E are at equal distances from its circle center. Okay? तो ये जो हमारे हैं इस center से ये सारे के सारे हमारे बराबर ही distances पे होंगे, like that way. Okay? So this is the property of circle. So now move on, terms related to a circle. Radius क्या होता है हमारा? The radius of the circle is the distance from its center to any point of the edge of the circle. In the given figure, OA, OB and OC are radii, means plural of radius. A circle may have unlimited radii, but they all are same length. So ये जो हमारा सेंटर से ये जो लाइन हमारी जा रही है, ये बच्चों हमारी होती है रेडियस. इसको रेडियस बोलते हैं. ओके और इसकी जो लेंथ होती है ये सेम होती है. ओके सो दिस इज कॉल्ड रेडियस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेटा. सो नाउ मूव ऑन डायमीटर. अब डायमीटर क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द सेंटर दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, लाइक दैट वे. दिस इज कॉल्ड डायमीटर. जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है बट ये सेंटर से होती भी जाएगी. Here AB is a diameter and AB is equal to 2AO or is equal to 2OB. Thus diameter is 2 into radius. Chord. The line segment formed by joining any two points on the circle is called chord. In the given figure, AB, CD, EF, GH, IJ, MN and KL are chords of the circle. The diameter is the biggest chord in the circle. Okay बेटा. So ये जो हमारा है AB, ये हमारा chord कहलाती है. ये भी हमारी chord है, ये भी chord है. So ये जो हमारी जा रही है जो सीधे, this is called chord. Okay. So I hope you understood well. और जो diameter होती है वो biggest chord होती है. Okay. So now circumferences. अब ये circumferences क्या होता है? Total length of the boundary of a circle is called its circumferences. जो हमारा किसी भी सर्कल के जो टोटल बाउंड्री होती है ना वो हमारे circumferences कहलाती है. Now सेमी सर्कल क्या होता है? The diameter of a circle divides it into two equal halves. So each half is called semicircle, like that way. Now arc. A part of the circumferences of a circle is called an arc. Here AB and CD are the arc. They are denoted AB and CD like that way beta. Okay. I hope you understood the whole term diameter, chord, circumferences, semicircles and arc, etc. So now move on, solve examples. Example number 1. If radius of a circle is 3.2 centimeter, then find its diameter. Yes, radius हमारा 3.2 centimeter है तो of course diameter उसका double होगा. So just multiply by 2, then we can say that 6.4 centimeter is the diameter. Example number 2. If diameter of a circle is 8.4 centimeter, then find its radius. Diameter 8.4 है. अब उसको रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो डायमीटर का होता है वो हाफ होता है. सो 4.2 सेंटीमीटर इज द रेडियस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ मूव ऑन एग्जांपल नंबर 3. ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. अब आपने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है. मेथड. वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास कंटेन्ड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, लाइक दैट वे. ओके. A compass has 2 legs. One leg has steel end. To another leg, a pencil is fixed by means of a screw in such a way that the pencil's end and the steel end are at the same level. First one is open the legs of the compass to 3 centimeter length using the ruler. See figure A. Like that way, beta.
3 पे आपने कर देना है, पॉइंट फिक्स कर देना है और स्टार्ट करना है किससे, मार्क एनी पॉइंट 0 ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, और 0 से शुरू करते हुए 3 पर आपने इसको ले जाना है. प्लेस द स्टील एंड ऑफ द कंपास एट पॉइंट O. Now hold the head of the compass between the thumb and the forefinger such that the pencils end touches the paper. Now turn it completely round so that the pencils end traces a circle like this way. Okay, so this is how you have to just draw a circle. Okay beta, I hope you understood well. So now move on, exercise 15.3. Fill in the blanks. All the radii of a circle are. जो हमारे सर्कल्स के जो सारे रेडियाई होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, यस, इक्वल लेंथ के होते हैं. सो राइट इट इक्वल. डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डैश इट्स रेडियस. जो सर्कल का जो हमारा डायमीटर होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस. सो राइट इट ट्वाइस. Okay, so these are the other questions. You have to complete it your own beta. Okay, so I hope you understood well. So with this we ended the chapter. Just do practice well and do rest of these exercises by your own.